वेलकम इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द चैनल इन्वेस्टर म्यूजिंग्स। तो आज हम बात करेंगे इस बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग 1.0 सीरीज में डीसीएफ की। डीसीएफ इज डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे एनालिस्ट या बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब वो किसी भी स्टॉक की, किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि इसका डिस्काउंटेड कैश फ्लोज वैल्यूएशन कितना आ रहा है। तो वैल्यूएशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि हम जानना चाहते हैं। लेट्स से कोई कंपनी गोइंग फॉरवर्ड जो अर्निंग्स उसकी होंगी उसके हिसाब से उसकी आज वैल्यू क्या होनी चाहिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है बिकॉज आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आप उसमें जितने प्राइस पे उस कंपनी को खरीद रहे हैं क्या वो एक उसका एप्ट प्राइस है या नहीं है। सो टू डू दैट there is a concept which is discounted cash flows which is followed। आज हम उसकी बात करेंगे और ये कितना अच्छा है, कितना हमें इसे यूज करना चाहिए, ये सब बातें भी हम इस वीडियो में करेंगे। जस्ट टू बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। जस्ट अ डिस्क्लेमर बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ कमिंग टू डीसीएफ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये डीसीएफ होता क्या है, इसका मतलब क्या है। सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज अ वैल्यूएशन मेथड used to estimate the value of an investment based on its expected future cash flows। तो जब कोई भी कंपनी होगी जिसको आप जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं या जिसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आज वो कितना प्रॉफिट कमा रही है या उसकी अर्निंग्स कितनी है आज। हम क्या करते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में, हम देखना चाहते हैं, आप सिर्फ आज को देख के उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यू विल ऑल्सो थिंक अबाउट दैट वेदर दे विल कीप ऑन अर्निंग दिस मच गोइंग फॉरवर्ड। जैसे कुछ कंपनीज हैं लाइक पिडिलाइट, लाइक एशियन पेंट्स, दीज आर द कंपनीज who are earning, whose earnings have been improving and they have a stable earnings for last so many years, I mean last 20 years, even more than that। इन केस ऑफ अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी को लेते हैं, उसका आज की अर्निंग्स देखते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर आगे 10 साल के लिए वो किस तरीके से उसकी अर्निंग्स इंक्रीज होगी या स्टेबल रहेगी। वो हम उन अर्निंग्स को फैक्टर करते हैं और उनकी आज की वैल्यू निकालते हैं। अब जैसे आपको समझ आ रहा होगा कि आज अगर आपके पास 100 रुपीज है और गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर उस 100 रुपीज की वैल्यू कम हो जाती है, देन यू गो टू सेकेंड ईयर उसकी फर्दर कम हो जाती है बिकॉज इन्फ्लेशन इंक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यू है उस मनी की दैट रिड्यूसेस ओवर द स्पैन ऑफ टाइम। सो व्हाट वी डू इन अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज, लेट्स से टुडे द कंपनी इज अर्निंग 1000 एंड द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो द कंपनी इज सपोज्ड टू अर्न 1000। तो जो नेक्स्ट ईयर का 1000 है उसको हम आज कितनी उसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। सो विल टॉक अबाउट दिस हाउ वी डू दैट, बट दिस इज द वे हाउ वी डू अ वैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज यूजिंग अ DCF। It's a measure of how much profit the company is generating from the capital employed, which you have implied on this. Now, coming to a DCF. So DCF का formula, what you are seeing on the screen, this shows the formula of DCF. Let me just mark it for you. So this is the formula. CF1 basically says first year में कितना cash flow है। CF2 talks about second year का cash flow कितना है। CFN talks about nth year, which could be a third year, which could be a fourth year। nth year में इसका कितना cash flow है और हम एक R factor लेते हैं जिससे आप divide करते हो। So you divide it by 1 plus R, 1 plus R square and so on and so forth। R is a discount rate which you consider and basis that you divide the cash flows from that particular year। Now what happens out here is, like I told you, CF1 is for first year, CF2 is for second year, CFN for nth year। The purpose of DCF analysis is to estimate the money an investor would receive from an investment adjusted from the time value of money। So adjusted for time value of money का मतलब यही है कि अगले साल उस 100 रुपए की वैल्यू जो आपके पास आज 100 रुपए है, उसकी वैल्यू अगर अगले साल भी आपके पास 100 रुपए होंगे या नेक्स्ट ईयर में 100 रुपए होंगे तो उस 100 रुपए की वैल्यू कम होगी। सो दैट टॉक्स अबाउट अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिकॉज the inflation goes up, due to which the value of a money comes down। So moving ahead, and again we have taken this, the reference for this is Investopedia। Now coming to an example, let's understand, कोशिश करते हैं इसको एक example से समझने की। Let's say अगर discount rate हमारे पास 10% है, that is that R which you have seen in the formula, an investment that would produce $1000 per year प्रोड्यूस करता है एक इन्वेस्टमेंट फॉर द फॉलोइंग 2 years, नेक्स्ट 2 years के लिए $1000 एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आपका प्रोड्यूस कर रहा है। हाउ मच वैल्यू विल यू ड्राइव आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। सो लेट्स से एक कंपनी है ABC। नाउ इन फ्रॉम दैट कंपनी आपका फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पास टोटल आते हैं $1000, सेकेंड ईयर के एंड में भी आपके पास आते हैं $1000। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट कि आज मुझे उस कंपनी को कितने
कितना प्राइस देना चाहिए या कितने में कितनी उसकी वैल्यूएशन उस कंपनी की होनी चाहिए. द वैल्यू ऑफ मनी इन द फ्यूचर विल बी लेस देन द करंट वैल्यू ऑब्वियसली बिकॉज द इन्फ्लेशन गोज अप और इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगी नेक्स्ट ईयर में और उससे अगले साल में. सो उसकी वजह से आज की वैल्यू उसकी कम होगी. तो अगर आप फर्स्ट ईयर की वैल्यूएशन निकालेंगे बाय द सेम फॉर्मूला विच यू रिमेंबर राइट, कैश फ्लो फ्रॉम फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 1+R, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो $1,000 की वैल्यू बिकॉज R इज यू आर टेकिंग 10%, right? So 10% would be your R, and at the same time cash flow would be $1,000. Now अगर इस $1,000 की आप वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आती है $909. That's the present value. Again $1,000 for the second year, वैल्यू आएगी 826.4. तो आप एक्चुअल में तो $2,000 ओवर द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 2 years कमा रहे हैं, बट उनकी प्रेजेंट वैल्यू $1,735.4 है. सो ये आपको देता है वैल्यूएशन ऑफ द नेक्स्ट 2 years के कैश फ्लोज की क्या करंट वैल्यू है. दैट्स हाउ वी यूज DCF as a concept. So we tried, or through this series we are trying to put together the basic concepts जो कि एक investor के लिए, someone who is just starting the journey who wants to learn investing, वो important है. और आपने ये terms बार बार सुनेंगे जब भी आप कोई let's say business channel देखते हैं या कोई investor की बात सुनते हैं या किसी analyst से बात करते हैं. So they keep on using these terms. Through this series our basic idea is to put together all those ratios, all those basic terms, and you can learn from that. To get more or to know more about these things, you can join our website or you can visit our website, which is investormusings.com. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं at the same time आपको लगता है कि हमें और किस चीज़ पे या किस पर्टिकुलर रेशियो पे नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए, आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं with the name Investor Musing. So आज के लिए that's what we have, and we'll come up with the similar video now going forward. Thank you so much for joining us today.